Ajiro question: how does Indian society maintain continuity in traditional social values? Enumerate the changes taken place in present times. So question रे दीटा पार्ट अच्छी इंडियन सोसाइटी रे जो ट्रेडिशनल वैल्यू अच्छी सेटा आज पर्यंत केमिति कंटिन्यू हला आउ सेकंड पार्ट रे कहिछि जो चेंजेस हेछि कौन से चेंजेस हेछि ता विषय टिके लिखिया पड़िबो. सो फर्स्ट वर्ड होछि इंडियन सोसाइटी तो ता विषय किछि इंट्रोडक्शन. इंडिया इज अ rich mosaic of diverse cultures, communities, languages, religions, ethnic groups, and communities, etc. There are diversities within it, yet there are threads of unity with a common shared historical evolution. এটা ଗୋଟେ solid इंट्रोडक्शन. सोसाइटी ऊपर जेकोसी गोटे क्वेश्चन पचार ये गोटे सॉलिड इंट्रोडक्शन हो पार. सो नेक्स्ट पॉइंट सर्टेन सोशल वैल्यूज से पचार वैल्यू को वैल्यू से वैल्यू विषय लिखा. सर्टेन सोशल वैल्यूज लाइक टॉलरेंस, कलेक्टिविज्म, स्पिरिचुअलिज्म, नॉन वायलेंस हैव बीन ए पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम. एथिरे आपण अलग किसी भी ऐड करेंगे, ब्रदरहुड भी ऐड करेंगे, फ्रेटर्निटी भी ऐड करेंगे. सो ये जो वैल्यू सिस्टम रही है को मेथड द्वारा को इंस्टीट्यूशन द्वारा आज पर्यंत आम भितर रही से सब है इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली, सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स टुगेदर, मैरेजेस हैव बीन हेल्प इन प्रिजर्विंग दिस वैल्यूज. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट हो तो ये जो प्रिजर्व कला तार अलग गोटे मेथड भी अच्छी सेटा होची इंटरडिपेंडेंसी. इंटरडिपेंडेंसी इज द बिगेस्ट फैक्टर टू प्रिजर्व दीज कल्चर्स. द बिगेस्ट factor that contributes continuity of traditional value is social इंटरडिपेंडेंसी. टिके हाईलाइट करके अंडरलाइन करदे सोशल इंटरडिपेंडेंसी बिकॉज people are born to groups, subgroups, castes, clans, and religious communities. Thus, they have deep sense of inseparability from these groups. सो एथनिक जो वैल्यू सिस्टम अच्छी से दीटा जिनस द्वारा आज पर्यंत रही है फैमिली. दैट मे बी फैमिली, जॉइंट फैमिली, फेस्टिवल्स, मैरेजेस. सेकंड पॉइंट हूँ सोशल इंटरडिपेंडेंसी. सोशल इंटरडिपेंडेंसी केमती आसला
बिकॉज एठी हमर ग्रुप्स अच्छी सब ग्रुप्स अच्छी कास्ट अच्छी क्लान्स अच्छी सब क्लान्स अच्छी रिलीजियस कम्युनिटीज अच्छी सो people are born to these groups only and they want to attach themselves with these groups thus the traditional values those are attached to these groups have been continued till now a point be important so next you are next point टिके मॉडर्न विषय लिखा माने आफ्टर इंडिपेंडेंस से समय डेमोक्रेटिक वैल्यूज केमती आम नहीं आसिले पॉलिटिकल डिपेंडेंसी केमती रोचे इंडस्ट्रियलाइजेशन द्वारा कौन है अर्बानाइजेशन द्वारा कौन है से विषय दुटा पॉइंट लगे ऑफ द वेरियस factors which have enabled our society to adopt or fail to adopt the most important ones are political independency, democratic values, democratic values, industrialization, urbanization, education, legislative measures, social change, and social movement and social awareness like feminism, globalization, and anti casteism. सो एथे आम कौन लिखिले बहुत गुड़े फैक्टर अच्छी जो फैक्टर को आम एडप्ट भी करछे आउ एडप्ट कर फेल भी होछे से सब भी केमिति इम्पैक्ट पकेला on the various factors which have enabled our society to adapt or fail to adapt. The most important ones are political independence, democratic values, industrialization, urbanization, education, legislative measures, social change, and social movement, and social awareness like feminism, globalization, and anti casteism. मॉडर्न वैल्यू सिस्टम कौन कौन आमर इक्वालिटी नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द कास्ट बेसिस ये सब वैल्यू सिस्टम को आम मैंने आपणे नीचे मॉडर्न वैल्यू सिस्टम such as equality, non discrimination, etc. as a part of new values we have added
to our already enriched values. এটা ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପଏଣ୍ଟ ହେବ କାହିଁକି ଆମେ ପାଷ୍ଟରେ ଥିଲେ ପୁଣି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଟିକେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଟାଇମ୍କୁ ଆସିବା modern value systems such as equality non-discrimination etc as a part of new values we have added to our already enriched values ଏଥିରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି social media plays an important role both positively and negatively such as hashtag me too movement आपको टिके हाईलाइट कर दो though these are good movements in the modern times there are certain changes that hamper the old traditional values such as losing of nuclear families sorry losing of joint families to nuclear families that is the biggest threat our society is facing now however some changes are detrimental to society like decline in tolerance level failure of institution of marriage rise of nuclear families rise of individualism decline of collectivism these are the things that those are detrimental to the society but Indian society are so rigid that it will take millions of years to deteriorate such kind of situation traditional values and ways of thinking still play a strong role in India's fabric and would continue to do so would seem to continue to do so despite the onslaught of globalization and consumerism. So nearly 220 words